यद्भद्रं तन्नमासु ॐ अग्नेनाय सुपधाराय यस्मान् विश्वा देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मत्युहुराणकान्ते नमोतिं विधेम ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टदेवी स्वस्ति. Yes, ma'am. Silence. Inauguration series is the inauguration of this lecture series is being organized by the Center for Human Sciences, Rishi University, in collaboration with Bharatiya Vidya Bhavan, New Delhi, ICPR, and Ministry of Education, Government of India. This program is a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, where we are celebrating 75 years of India's independence and 150 years of Sri Aurobindo's birth. So now I would like to introduce our esteemed guests for this event. We have as our chief guest Honorable Minister of State for Culture and External Affairs, Meenakshi Lekhi ji. After having obtained her bachelor's degree from Hindu College, University of Delhi, she has studied law and from the Faculty of Law, University of Delhi, and apart from being a legislator, she is also a lawyer practicing at Delhi High Court and the Supreme Court of India. So, I would like to invite Sri Rajesh Mishra ji, Registrar, Bharatiya Vidya Bhavan, to facilitate the Honorable Minister. Thank you, sir. And as our special guest for this event, we have Dr. Sachidanand Mishra ji. He is a remarkable scholar of Sanskrit and has been teaching at Banaras Hindu University as a professor of philosophy and religion. He has been awarded with Maharishi Badrayan Vyas Samman by the then President of India, Pratibha Patil ji, for his outstanding contribution towards Sanskrit. And he is currently serving as the member secretary of the ICPR. And I would like to invite Sanjeev Kumar ji, Dean Rashtam School of Public Leadership, to honor our guest. Please, sir. Speaker for today's event, we have Dr. Makarand Paranjapi ji. He is a former director of the Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, and is a professor of English at the Center for English Studies at Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He is also a greatly celebrated novelist and a poet and his latest novel, Body Offerings, explores the age-old questions related to love and relationship. It is out in the market, so I request all of you, those who are interested, to book your copy soon. And to honor him, I would like to invite Professor Mala Kapadia ji, Professor, Rashtam School of Public Leadership, to honor our guest. Thank you, ma'am. We have Shri Rajesh Mishra ji, Registrar, Bharatiya Vidya Bhavan, and
He is a retired officer and he has also served in many capacities in the government, including the Secretary of Education, Arunachal Pradesh. And to honor him, I would like to request Dr. Sampadanand Mishra ji, Director, Center for Human Sciences, Rishi University, to honor our guest. Physically here, but without his cooperation, nothing of this would have been possible. He is a retired IAS officer and formerly the Secretary in Government of India. And during his service to the nation, he has handled very sensitive assignments in India as well as abroad. We have Professor Shashi Balaji, and she is the Dean of Center of Indology at Bharti Vidya Bhavan. And she specializes in Buddhist iconography and cross-cultural connection among Asian countries. And to honor her, I would like to invite Professor Riva Rana, Dean School of Education at Rishi University, to honor our guest. Thank you so much, ma'am. And last but not the least, we have our very own Dr. Sampadanand Mishra ji, Director, Center for Human Sciences, who is the convener of this entire program. And to honor him, I would like to invite Sri Vijay Bhardwaj ji, Deputy Registrar with Bharti Vidya Bhavan, to honor our convener. So thank you everyone, and without much further ado, I would like to invite Dr. Sampadanand Mishra ji to give the मंचासन आदरणीय मीनाक्षी लक्ष्मी जी और प्रोफेसर मकरंद परांजपे जी, प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रा जी, राजेश मिश्रा जी, प्रोफेसर शशि बाला जी, वो सभा में समुपस्थित अन्य मित्रगण, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही संक्षेप में पहले मैं आप सभी का स्वागत अभिवादन करता हूं। और बहुत ही संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से ठीक 2 साल पहले प्रोफेसर माला कपाडिया जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, 12 अगस्त को 150 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन श्री अरबिंदो के, उसका जो ब्लूप्रिंट है हम लोगों ने ये तैयार किया था और उसको सबके साथ हमने साझा किया था और उसी दिन से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ठीक 2 साल बाद और वही डेट पे 12 अगस्त को आज ये लेक्चर सीरीज का उद्घाटन हो रहा है। और इस लेक्चर सीरीज में श्री अरविंद के जो विशेष योगदान है भारत के स्वाधीनता संग्राम में और भारत की स्वाधीनता प्राप्ति में, और उनके जो नेशनलिज्म है, उनके जो एजुकेशनल फिलोसॉफी है, उनके जो स्पिरिचुअल फिलोसॉफी है, उनके जो योग है, ये सबका योगदान भारत के स्वधर्म को, भारत के स्वभाव को और स्वराज प्राप्ति में किसे इसका योगदान रहा है, इन विषयों को लेकर हम 10 लेक्चर सीरीज करेंगे। ये लेक्चर सीरीज में 10 लेक्चर होंगे और इसके लिए ICPR को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रा जी को, जिन्होंने ये काम सौंपा है हमारे ऊपर। और आशा है कि बहुत सारे, जैसे आज का लेक्चर जो होगा, पहला लेक्चर होगा जो प्रोफेसर मकरंद परांजपे जी का, और इसी प्रकार हम 10 अन्य लेक्चर कराएंगे इस सीरीज में, जिससे कि ये 150 इयर्स श्री अरबिंदो का जो सेलिब्रेशन हो रहा है और 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस भी है,
इसमें हमारा थोड़ा बहुत योगदान रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और आशा है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे आप बहुत खुश होकर जाएंगे और मकरंद भाई का लेक्चर तो ज़रूर ही आप लोगों के लिए प्रभावी रहेगा। और बस फिर से एक बार मकरंद भाई आपको पुनः प्रणाम। मीनाक्षी जी, आपकी उपस्थिति भी बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए और हम आशा भी रखते हैं आपको सुनने के लिए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर यू। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for setting up the context for the lecture series. And now I would like to invite Dr. Shashi Balaji, who will be speaking on behalf of Sri Ashok Pradhanji, Director, Bharatiya Vidya Bhavan. Welcome, ma'am. सभी को सादर नमस्कार। सम्माननीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, डॉक्टर मकरंद बरंजोपे जी, डॉक्टर संपदानंद मिश्रा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्रा जी, राजेश मिश्रा जी एवं इस सभा में पधारे सभी गणमान्य विद्वान एवं अन्य अतिथि। मैं दो शब्द हिंदी में कहना चाहूँगी क्योंकि ये हमारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है और महर्षि अरविंद जैसे महान विभूति का हम 150वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारतवर्ष एक विलक्षण राष्ट्र है। इसकी आत्मा ऋषियों मुनियों ने, महर्षियों ने, आचार्यों ने और गुरुओं ने पुष्पित और पल्लवित की है। इसमें एक महान संस्कृति विलसती है। इस संस्कृति का हनन 1000 वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने किया। हम लोग दास रहे। राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ साथ भारतीय विलक्षण धरोहर का संरक्षण, संपोषण एवं संवर्धन एक अति महत्वपूर्ण विषय रहा है। इसने सहस्त्रों वर्षों के त्याग और तप के आधार पर एक विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जिस समय भारत माता स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी कराह रही थी, उस युग में ऐसी महान विभूति महर्षि अरविंद का जन्म होता है। उनके हृदय में राष्ट्र की चहुओर स्वतंत्रता का एक स्फुलिंग धधक रहा था। अंग्रेजी शिक्षा उन्हें अपने लक्ष्य से विमुख नहीं कर पाई। दिव्य भव्य भारत के सृष्टा, उसके निर्माता के रूप में एक स्वप्न संजोए वे आजीवन इदम राष्ट्राय इदम न मम का मंत्र जाप कर उसकी जीवन की आहुति देती रही। इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करने के लक्ष्य से और अगली पीढ़ी, जैसा कि आप इस भवन में देख रहे हैं, अगली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे मनस्वी निदेशक श्री अशोक प्रधान जी किसी कारणवश आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अतः मैं उनके द्वारा दिया गया संदेश आप तक पहुंचाने का अपना दायित्व वहन करती हूँ। श्री अशोक प्रधान जी ने भेजा है, भारतीय विद्या भवन is known for its unparalleled commitment to promoting Sanskrit and Sanskriti. Was set up with the specific aim by Sri K.M. Munshi ji through a charitable trust in 1938. With modest beginnings and humility towards Indian knowledge systems, the institute has more than 114 centers across the globe. However, it is known to very few people to date that the inspiration and seed of protecting, harnessing and seeing Indian knowledge as substantive and identity building root came mainly from the inspiring influence of his teacher Sri Aurobindo. Today, as we celebrate Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, memories and metaphors that directed Sri Munshi ji towards this path emanated from his English and Western Bengali professor who would transform himself into a yogi in the coming years. Munshi ji states in his work, Foundations of Indian Culture, that Sri Aurobindo metamorphosed him into an apostle of Indian nationalism based on history, culture, philosophy and dharma. It was the influence and impact Sri Aurobindo's philosophy that led Munshi ji on the path of creating a dedicated institution for teaching, proliferation, researching in depth into the foundations of Indian culture. He firmly believed that he had learned from his guru, Sri Aurobindo in Baroda, that there is much to learn from the living foundations of Indian culture that have not dismembered against the test in time
unlike other civilizations that have become merely objects of museum value. Indian culture has only argued socially, politically, and culturally through various scientific and economic phases, with the 6,000-year-old foundations continuing to act as the dharma in thought and practice. He learned from Sri Aurobindo that to build a nation and progress one's field must be firmly planted in its culture. With the onset of Western education, most people find it difficult to vitalize roots in their own soil, an epiphany that many are yet to deal with. Even 150 years or so have passed. Munshi notions of vitalizing our roots in the soil had as its backbone in the philosophy of Sri Aurobindo, which had as its main tenet the idea of supermind. It is the intermediate power between the supreme reality Brahman and the manifested world. It is the supermind that had been relegated to the background through the onslaught of Western education. Being impervious to human flaws, it has been omnipresent in the Indian mind. It can be realized within ourselves as it is always present within our mind. Bhavan's commitment towards his Indian history, culture, Sanskrit and Sanskriti is philosophical yet realistic vision of invoking and firmly reinstating its forward present in the lives of the billions of Indians. Sri Aurobindo did not portray supermind as an original invention of his own, but believes that it can be found in the Vedas, and the Vedic gods represent powers of the supermind. In this work, the integral yoga, he declares that by the supermind is meant full truth, consciousness of the divine nature, in which there can be no place for the principle of division and ignorance. It is always a full light and knowledge superior to all mental substances and mental movements. It is for this very process, the realization in all Indians, that his student and our founder, Sri K.M. Munshi, dedicated his life. It is great honor for Bharati Vidya Bhavan to have the opportunity to host the inaugural event for the Guru of the Guru. Namaste and thank you very much. Thank you so much, ma'am, for addressing us on behalf of Dr. Shri Ashok Pradhanji, and for explaining to us and underlining the contributions of Sri Aurobindo towards the service of our nation. And now I would like to invite Dr. Sachidanand Mishra ji, Member Secretary ICPR, to address us on this occasion. Welcome, sir. नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। समादरणीय मंत्री जी श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, इस सभा कक्ष में उपस्थित आज के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर मकरंद परांजपे जी, इस सभा कक्ष में उपस्थित श्री राजेश मिश्र जी, डॉक्टर शशिबाला जी, इस कार्यक्रम के अध्वर्यु डॉक्टर संपदानंद मिश्र जी, और इस सत्र में उपस्थित श्रोता के रूप में आप सब विद्वज्जन, विद्यार्थीगण, भारत सरकार के द्वारा स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, और उसी क्रम में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद को भी कुछ एक कार्यक्रम आयोजित करने थे। दर्शन जिस प्रकार से वैचारिक संपत्ति है, विचार की संपत्ति है, और उसमें जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वाधीनता की बात करते हैं, तो यह स्वाधीनता, स्वतंत्रता सचमुच में वैचारिक स्वाधीनता, वैचारिक स्वतंत्रता से प्रारंभ होती है। कोई भी देश पहले अपने विचारों में स्वतंत्र होता है और उसके बाद वह स्वतंत्र होता है भौतिक रूप से। यदि ऐसा नहीं हुआ तो देश के स्वतंत्र हो जाने के उपरांत भी वह देश
किन्हें न किसी रूप में परतंत्र ही रह जाता है। आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव की संकल्पना लेकर के इसको स्मरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष बीत गए हैं, तो उसमें यह विचार करना अति आवश्यक है कि हम भौतिक स्वतंत्रता के साथ साथ जो मानसिक स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को किस सीमा तक प्राप्त कर सकें। 20वीं शताब्दी के जो महत्वपूर्ण चिंतक रहे उनमें एक केसी भट्टाचार्य बहुत माने हुए चिंतक हैं, और उनका एक बड़ा प्रसिद्ध आलेख है स्वराज इन आइडियाज, विचारों में स्वराज। क्योंकि हमारा स्वराज सबसे पहले विचारों में आना चाहिए। अगर हम भौतिक रूप से स्वतंत्र हो गए लेकिन वैचारिक रूप से हम पश्चिम के गुलाम ही बने रहे, जिसकी तरफ हमारी जो चिंतन पद्धति है, हमारी जो वैचारिक पद्धति है, उन सब में अगर हमारा सोचना उसी तरह से बना रहा, अगर हमारी जो परंपरा है, हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है, हमारा जो पारंपरिक विधाएं हैं, उन विधाओं के प्रति कोई आदर की दृष्टि नहीं आई, उन विधाओं को पुनः स्थापित करने के लिए अगर हमने कोई प्रयास नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में स्वतंत्र होने के बाद भी सचमुच में हम गुलाम ही रह जाएंगे। महात्मा गांधी ने जब हिंद स्वराज लिखा था तो उस हिंद स्वराज में इसी बात को रेखांकित किया था। एक छोटी सी किताब इसी तरफ संकेत कर रही थी कि देश को, भारत को अगर स्वतंत्र होना है तो किस प्रकार से स्वतंत्र होना है। हम दो चीजें आज मना रहे हैं, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य के साथ साथ श्री अरबिंदो के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, उसको भी हम स्मरण कर रहे हैं। अरबिंदो के जो विचार हैं, किस प्रकार से सारा लेखन अंग्रेजी में होते हुए भी गीता के ऊपर, वेदों के ऊपर, सावित्री के माध्यम से महाभारत को लेकर के वे अपने विचारों को रखते हैं। किस प्रकार से उन्होंने भारतीय मनीषा, भारतीय चिंतन पद्धति, भारतीय चिंतन धारा को पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया, उसको आंकने का एक अच्छा अवसर हमारे सामने है। और इस क्रम में यह एक 10 व्याख्यानों की एक श्रृंखला भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के द्वारा संपदानंद मिश्र जी के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। इसके अलावा और भी कई एक कार्यक्रम भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के द्वारा आयोजित किए जाने हैं। आगे क्रम में संगोष्ठियां भी आयोजित की जानी हैं। और यह भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद का एक मूल है कि वह जो भारतीय प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा को किस प्रकार से प्रतिष्ठित किया जाए, और उस प्रज्ञा को, उस विचार परंपरा के आलोक में जो ज्ञान की अन्य विधाएं हैं, उन अन्य विधाओं को भी किस प्रकार से परिमार्जित और परिष्कृत किया जाए। निश्चित तौर पे इन व्याख्यानों के क्रम में हमको एक नई दृष्टि प्राप्त होगी। बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारे बाद आदरणीय श्रीमती मंत्री जी का भी व्याख्यान है और मुख्य वक्ता जो आज के हैं उनका भी व्याख्यान है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। Highlighting the importance of achieving the independence of thought and mind in order to have a true sense of independence. And you explained this idea by taking example of K.C. Bhattacharya's Swaraj in Ideas as well as Mahatma Gandhi's Hind Swaraj. And you also highlighted how Sri Aurobindo endeavored to bring back the glory back to our nation. So thank you so much again, sir. And now I would like to request our chief guest for the event, Honorable Minister of State for Culture and External Affairs, Meenakshi Lekhi ji, to address us. Welcome, ma'am. Very much, बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सच्चिदानंद मिश्रा जी, श्री डॉक्टर माखन परंजपाई जी,
Sri Rajesh Mishra ji, Shashi Balaji and Sampada Nand Mishra ji, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तिरंगा, और मैंने आपकी एक पेंसिल जो है वो बगल में मार्कंड जी के पास पड़ी थी भगवा रंग की, तो मेरे फोल्डर में ग्रीन थी, तो मैंने वो भगवा वाली भी उठा ली और कहा कि भाई ये मुझे चाहिए, आई होप यू डोंट माइंड इट, आई एम गोइंग टू स्टील योर पेंसिल आफ्टर इन्फॉर्मिंग यू. That is what this color does to us, and that is what Tiranga does to us. We all want to possess it. We all want to get colored in it. We all want to put it all over. I saw her sari and I was so enthralled. I say, you know, maybe I should have also done something more interesting than I have done. But the fact is, तिरंगे का जो असर है वो हम सब पर इतना गहरा है कि उस रंग में हम सब अंदर तक लिपटे हुए हैं. लेकिन आज सुबह से मैं बचपन की कुछ चीज़ें याद कर रही थी. कुछ लोग मेरी उम्र के हैं तो उनको शायद तो समझ आएगा, कुछ लोग कम उम्र वाले हैं उनको शायद ये पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए कहानी बतानी ज़रूरी है. और वो कहानी है कि कॉलेज ख़त्म किया तो 19 साल की उम्र में तो कॉलेज ख़त्म हो जाता था, और रोविंग माइक्रोफोन करके ऑल इंडिया रेडियो पर एक कार्यक्रम चला करता था जिसके 50 रुपये मिलते थे हमको, और एक बड़ा सा टेप रिकॉर्डर भारी भरकम कंधे पे टांग कर आपको इंटरव्यू करना होता था. तो हमने एक बार इंटरव्यू तय किया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के साथ. एक दोस्त थी, उनके पिताजी उस समय गृह सचिव थे, तो उनकी मदद से वो इंटरव्यू सेटअप हुआ. बच्चे कैसे फैसिनेट होते हैं चीज़ों से, तो उस समय उनकी टेबल के ऊपर हमने तिरंगा रखा हुआ देखा. तो मन ऐसा कि उठा लें, अपनी टेबल पे भी जाके चिपका दें, पर मालूम था उतनी उम्र तक कि ये गैर कानूनी है. तिरंगा हर कोई अपनी टेबल पे नहीं रख सकता, और बहुत बड़ा आदमी होना होता है जिसको तिरंगा रख सकता है. और जो कप प्लेट थे उसके ऊपर नेशनल एम्बलम एनग्रेव था. आज नेशनल एम्बलम हम सबको उपहार के तौर पर मिला है. तो ये बदलाव जो भारत में आया, मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब है उम्र मेरी आप सब लोगों से ज़्यादा, लेकिन फिर भी 30 साल के भीतर, 30-35 साल के अंदर ये बदलाव देश में आया है, जो कि मेरी अपनी जीवन के देखा हुआ पक्ष है. तो वो तिरंगा जो हम सबके अंदर तक समाहित है, हम स्कूल में, कॉलेज में, बच्चा पैदा होने से लेकर बात तक उसको तिरंगे की आन बान शान के बारे में समझाते हैं. हम उसके मन में, मस्तिष्क में ये भरते हैं कि तिरंगा ही हम सबका सबसे बड़ा सिंबल है, और उसकी वही हमारी एकता, अखंडता का प्रतीक है. एक प्रतीक के रूप में वो हमारा ईश्वर है. लेकिन उस ईश्वर को हम ना अपना पाए, वो भी आज़ाद भारत में, तो सोचिए क्या तकलीफ रही इस देश की, किस तरीके की नेगेटिविटी इस देश में पैदा की गई कि तिरंगा जो हर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क की जान है, उसको हम नहीं समाहित कर सकते. और जब श्री अरबिंदो को मैं याद करती हूँ तो मुझे याद है स्कूल की ही बात, एक छोटी सी बुक होती थी मदर करके, इतनी पॉकेट बुक टाइप, वो प्रेयर्स, तो हम वो बहुत लंबी चौड़ी प्रेयर नहीं, पर वो इतना सा 5 लाइन 4 लाइन ऐसे पलट के रोज सुबह एक प्रेयर कहना है. वो भी संस्कार के रूप में हम सब बच्चों को पास रहती थी. तो संस्कार तो थे, मगर संस्कार को व्यक्त करने का जो माध्यम था वो नहीं रहा. और उस संस्कार को व्यक्त करने का काम जो है वो मुझे लगता है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको वो व्यक्त करने की एक आस्था और अवस्था प्रदान की. और वो आस्था अवस्था शुरू हुई 12 मार्च 2021 को, जब 75 हफ्ते बचते थे आज़ादी का दिन 15 अगस्त से लेकर 75 वीक्स बिफोर that let us celebrate आज़ादी का अमृत महोत्सव, the nectar of independence.
And nectar of independence means celebrating all that is positive, good, and makes us proud about our heritage. And thus, Aurobindo's reflections I can see in everything, because Sri Aurobindo took the discussion about Azadi at that time from the elite drawing rooms to the streets. That's what his movement was all about. And this is precisely what Prime Minister is trying to do. Not letting Tiranga being unfurled by a few elites, not making it just a honorary task which is reserved for some, but every individual, every citizen of this country who's connected to Tiranga to feel, I mean, I'm sure we all feel, but have the ambition to exhibit the same patriotism. There is no difference between you, me and others. We are all just the same. That's what Prime Minister is trying to do. जो प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया, वो प्रयास यही था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को केवल कुछ हाथों में, कुछ लोगों के बीच नहीं, बल्कि जन भागीदारी का माध्यम बने। और जन भागीदारी के माध्यम से हम एक हर घर तिरंगा, हर एक घर पर तिरंगा का मतलब है उस परिवार के हर व्यक्ति को जो गर्व महसूस होता है वो गर्व महसूस हो, और उसके रास्ते में आने वाली जो इम्पेडिमेंट्स हैं वो इम्पेडिमेंट्स को हटाया जाए। आप सोचिए कानूनी रूप से, भाई मैं बच्चा थी उस समय, लेकिन उस बच्चे के मन में भी था कि काश ये टेबल से फ्लैग उठा के मैं ले जाऊं और अपनी टेबल पे जाके सजा दूं। अब आप यहाँ बैठे जो मेरी उम्र के लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताओ आप में से कितनों के मन में ये बात आती थी? सभी के, सभी थे, सभी मेरे जैसी थे या मैं सब जैसी थी? हाँ, we are all just the same. We all wanted to do it, could not do it. Imagine the pain this country has gone through. और वही तिरंगा जिसको लेकर इतने सारे वीर वीरांगनाएं शहीद हो गए, माँ तंगिनी हजारा बुजुर्ग महिला हाथ में झंडा लेके गोली खाने के बाद चलती रही और शहीद हुई, छोटे बच्चे हाथ में तिरंगा लेके चलते रहे और शहीद हुए। वो तिरंगा जिसके ऊपर अनेकों कुर्बानियां गईं, लेकिन वो तिरंगा भारत के आजाद होने के बाद भारत का आम नागरिक नहीं लहरा सकता, नहीं फहरा सकता। और आज वो मौका आजादी के अमृत महोत्सव ने हमें दिया कि हम तिरंगा लहरा भी सकते हैं, फहरा भी सकते हैं और चेहरे पे भी लगा सकते हैं, और जो चाहे अदब के साथ, इज्जत के साथ वो कर सकते हैं। ऋषिहुड यूनिवर्सिटी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ये पटका देने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सही मायने में श्री औरबिंदो जैसे जितने हमारे हीरोज हैं आज़ादी के, ये उनको असली मायने में श्रद्धांजलि है। और उन्हीं को समर्पण के भाव से जब हम तिरंगे को देखते हैं तो वही समर्पण का भाव हम सबके मन में भी आता है। अब सब लोग श्री औरबिंदो नहीं बन सकते, सब लोग भगत सिंह भी नहीं बन सकते, सब लोग बंदूक उठा के AK-47 वाले टेररिस्ट का मुकाबला भी नहीं कर सकते, लेकिन श्रद्धा भाव तिरंगे के प्रति तो हम सबका एक ही है। लेकिन उसी समर्पण के भाव से क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देश के लिए जी सकते हैं? Whatever we are doing, we dedicate all that to the country's well-being. We dedicate all that to the divinity which has shown us the right path. And I think Sri Aurobindo, when little bit that I know of him, I don't claim to be a scholar. I'm sitting in the company of scholars and I'm very scared of making any wrong statement. But nevertheless, I'll give my analysis. And my analysis would be that when I look at Sri Aurobindo, I feel how many young kids would be here who will say, इतने सारे लोग IAS बैठे हुए हैं, कितने सारे लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत लोग। कम से कम घर में तो कहा ही जाता है कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो, बोला जाता है,
बोला जाता है या नहीं? हाथ खड़ा करें बच्चे. Please raise your hands because I think I know life. Yeah, it is said that join the civil services. Now here was one person who studied in England, who got into civil services, purposely did not give a writing test so that he gets out, exits out. मतलब वही बात है कि मेंस पास कर लिया, इंटरव्यू के लिए पहुंचे ही नहीं, गए नहीं. इसलिए नहीं कि पास नहीं कर सकते थे, जाना ही नहीं था भाई. वो तो खाली टेस्ट कर रहे थे कि पास कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिविल सर्विसेज उस जमाने में ज्वाइन किया और ठुकरा दिया. लंदन इंग्लैंड पढ़े हैं तो उसका मतलब ठीक ठाक उस जमाने में अमीर परिवार के बच्चे होंगे, coming from privileged background, but the moment he comes back to India, he drowns himself as a revolutionary, as a person who was a fiery freedom fighter, and I'm purposely using the word fiery. He was not ordinary freedom fighter, he was a fiery, lit up all the time, self-eliminating figure, both symbolically, literally, and philosophically. A fiery freedom fighter who transmutated himself as an ascetic. So nothing was about person, nothing was about my comfort, my life. Going back to the scriptures. So when the scriptures say, Gita we've all read, little bit less more, we've all done those chapters, and I must thank Bharatiya Vidya Bhavan. आपके यहाँ हमारे बचपन में कंपटीशन हुआ करता था गीता के श्लोक का, तो थोड़ा बहुत हमने भी याद किया था. तो जो उस समय याद किया था वो अब तक याद है. तो इसलिए बच्चों को सही संस्कार मिलना आवश्यक है. तो आपके यहाँ एक डिबेट होती थी, अंग्रेजी की डिबेट होती थी, और एक गीता का कंपटीशन होता था. I have participated in both at one time or the other, and I remember one shlok which says Nainam chindanti shastrani nainam dahati papka na chainam kalidyan tapo na shushati mahuta. And this is not just about soul. Think of it even from a scientific perspective. The perspective where we all rise from the soil, we all become one with the soil. We are all bodies made of some carbon, hydrogen, oxygen, organic material, and then we convert back into that. So H2O plus C6H5, whatever else, and calcium to whatever little minerals, and we are going to go back. So ये देह के बारे में तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. The limited time that we have when we use this body as a vehicle of knowledge and use that knowledge for general good, for public good, that will be the divinity within us. And thus, I think Sri Aurobindo was one person who connected humanity, a human life, with divinity. And from that perspective, he saw the entire philosophy. The entire existence was viewed from this lens, where he started visualizing things, that there is life above the normal day-to-day existence. We all have a purpose of living, and that purpose of living is for the public good. And of course, when you say the public good, it's about national good. It's in the service of the nation, and motivated so many people to combine the effects of divinity with nationalism and patriotism. So nationalism, patriotism, and divinity were not two verticals. It was the same vertical with two branches and support the entire Mahabharati. And thus in his writings, he would normally use Maish, Mardini, Mahabharati,
Mother India, those were his writings because he saw, he viewed. I mean, we've learnt it otherwise कि भारत कोई धरती का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीता जागता योग पुरुष है. But he saw this from the perspective of Shakti, from the divinity and Mother Goddess. Now, so many people constantly talk about gender in our time frame, but here are fiery men who bow before Shakti. In their imagination, Shakti is who they worship, and those are the traditions of India. And reaching those traditions, celebrating those traditions, is what Amrit Mahotsav is all about. Amrit Mahotsav is about celebrating ascetics and sadhus and rishis like Sri Aurobindo. And I want to quote here that some other great men, how they describe Sri Aurobindo. So if we go back, Dr. Radhakrishnan. So Radhakrishnan ji said that the most accomplished of modern Indian thinkers, and I don't think they are too used to that, most accomplished modern Indian thinkers, because you needed somebody to awaken all of us at that point in time when we had lost confidence, when we could not think that we can actually get up and realize the dream of free India. We needed someone to put that force behind that thought, and it was Sri Aurobindo who did that. And I'm not getting into all the underground movements which he started in Calcutta. So thought has to have an action also. With thought, actions. So and I'm relating it now to Azadi Ka Amrit Mahotsav, because what is Azadi Ka Amrit Mahotsav? Ideas at 75. Sri Aurobindo had ideas what he wanted, that is the idea of freedom. Resolves at 75. Of course, Sri Aurobindo had the resolve that I'm going to free Ma Bharati, and I'm going to instill that character in these lazy people who are not even getting up and who are not even willing to fight. Resolves. Actions at 75. So all those committees which he set up, all the underground movement he set up was part of action, and creating that integral yoga, because everything is coming out of our brains. Ideas to control over our physical existence, to the way we have to have the physical energy to deal with things. So integral yoga was part of that. Actions at 75. So actions at 75 would be Swachh Bharat Abhiyan, plastic free India, and gender equality, Beti Bachao, Beti Padhao, equal participation, justice for all, having a woman, that too from deprived communities and tribes who had been left out of the mainstream progress, to become the President of India. All these are actions, and these actions are oriented to make a just society. These actions are meant to take India forward and progressive ideas, achieving the goals. Now here, I feel Aurobindo's goal of free India was achieved. But what kind of society he dreamt of? What kind of India did he want? Have we achieved that? Tell me honestly, have we achieved that? Answer is no. So we needed someone at the helm of affairs like Mr. Modi as the Prime Minister of this country, who could instill those ideas back in us, who could tell us, look, we are at 75. We need to take stock of situation. We need to understand where we are going, and we need to take country forward as was thought about by our heroes. Those who sacrificed everything for the freedom of this country. For our future, they sacrificed their present. And are we doing enough to achieve those dreams? And that's where Lakshya Prapti, achievements, वो सब अभी पीछे है.
और इसीलिए 75वें वर्ष में हमको तय करना है कि 100वें वर्ष में कहाँ पहुँचना है, और 100वें वर्ष में जहाँ पहुँचना है, जहाँ श्री अरबिंदो के सपनों को हम पूरा कर सके, जहाँ हम आज़ादी के मतवालों के सपनों को पूरा कर सके, जहाँ हम जिन्होंने सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर किया उनको याद करके उनको श्रद्धांजलि दे सके, तो वो काम अभी बाकी है। That's why आज़ादी का अमृत महोत्सव। Please take stock. Be proud of what you have, but at the same time, that pride is not good enough unless you act and get inspired to live by those ideals. We need not sacrifice our life the way these people did, all the hardship they underwent, but we can learn to live and do the right things for the well-being of this nation. And that's what Azadi Ka Amrit Mahotsav is all about. And thus I remember how Sri Aurobindo at that point in time, when he's speaking to divinity, when he's asking Mother India, Mother Goddess, to give those powers and awaken the soul within every Indian to rise up. I'm sure something remarkable must have happened when millions and millions of people hit the roads. Something remarkable must have happened across society. And that's the spirit we need to enlighten again ourselves. And that's the spirit we need to generate within ourselves, so that 75th year becomes a year when we rise up, and in the history of India, people of India take charge with those yogic practices, that awakening that I choose to live for my country and do everything possible to live up to the dreams for which unsung heroes, the heroes of this country, sacrificed all. And again, Swadeshi was spoken about by Sri Sachidanandji. And so, of course, Swadeshi has had a history. But in 2020, I remember how Mr. Modi also talked about the same. In one of his radio programs, Man Ki Baat, he spoke about the same issue, and he said when from things like needle and matchsticks are also going to come from on a ship, what kind of country are we building? So this is taking a quote from Sri Aurobindo's Swadeshi movement and making it vocal for local movement. So vocal for local is nothing but a leaf from the book, the philosophy, the thought of Sri Aurobindo also. That when he's talking about Swadeshi, how that Swadeshi gets implemented in today's time and age. In today's time and age, Swadeshi gets implemented in the form of vocal for local, and same Swadeshi gets implemented further in the form of Atmanirbhar Bharat. So the history of India, which is a history of resilience. History of India is a history of resistance. Ma'am Shashi Balaji was speaking about 1,000 years of exploitation and all. I would go a little deeper than that, and I would say it's not 1,000 years of exploitation, but 1,000 years of neglect on our part also. Of course it was exploitation. If I'm going to behave in a certain way, I'll get exploited. It should be a learning for us also. Are we learning enough? Have we learned enough? Let's take stock of it. We got comfortable with our lives. We became selfish in our existence. We were too good. And I always say this, I said if India was such a rotten place, why was everyone coming? How were we working as a magnet for all the world? The fact so many people from cross cultures were traveling to India, wanting to control India, wanting everything from here means we were a country of knowledge, and we were a country of prosperity, we were a country of skilled people.
So knowledge, skill, all that we had. Then also, we got controlled. A handful of people controlled us. Something must have been wrong. And are we falling in the same trap? Time to think. Have we taken our independence for granted? That's my question. Have we become less responsible so far as our independent thought is concerned? Independence is one thought, but alongside, we have to learn to be responsible. And I usually say this, by Gulab, and I remember this as a young kid, I don't know why, coming here I'm remembering all my past memories of debates and things are coming back to me. So I remember long back, I must have been pretty young that time, and there was this debate. India experimented with nuclear energy, and my final take on this whole thing was कि भाई कि गुलाब का फूल है तो अहिंसा परमो धर्म है, और क्योंकि वो गुलाब का फूल रहना चाहिए। तो मैंने कहा भाई गुलाब के फूल के साथ कांटा होता है या नहीं प्रोटेक्शन के लिए? तो अगर गुलाब के साथ कांटा होता है उस फूल को फूल बनाए रखने के लिए भी, तो हमको जो कुछ डिफेंस में करना जरूरी है वो करना जरूरी है। अपने डिफेंस वीक रखेंगे तो फूल तो कोई भी तोड़ के ले जाएगा, चबा के चला जाएगा। तो इसलिए इस सारी लर्निंग का भी एक इतिहास है। We also need to learn from the drawbacks, and maybe this is the time to take stock of things. Maybe this is the time to understand that this was a country which did great work when it came to martial arts. We were the ones who taught martial arts to the world. We were the ones who were physically strong people. And we just give up all that. For what? Maybe it's time to rethink the policy. Maybe it's time that, and that's what again I'm coming back to Aurobindo for the same thing. Sri Aurobindo said this, that you want a fit mind very well, you need your vichar, thoughts in the right direction. But you have to be physically strong to achieve that. You need to do yoga to remain fit. This body is a vehicle to carry your soul and ideas and ideology. So you can't take away the physical existence from your emotional and intellectual existence. And if you want to win over any people, civilization, society, all you need to do is take away their pride. The moment you take away the pride, the moment you've told them, taken away the confidence, you've subjugated the generations. And that's precisely what happened with us. We did not succumb to it. It happened with us. Whole lot of us cringed, but did not get subsumed. And we did not get subsumed, and thus we had people like K.M. Munshi, we had Vidya, Bhavan, and we had so on and so forth, and we had the ashram in Pondicherry. Because we cringed, but we never got subsumed. We are a story of resilience, and that resilience needs to bring back all the ideas at 75. Let's make all the resolves at 75, put them into action, achieve the goals for which our freedom fighters sacrificed everything, and achieve the goals while celebrating our freedom movement. All these heroes. And when people say, "De diya azadi hame bina khadak bina dhal," I am not one who's for this thought. Because Gandhiji's importance cannot be undermined. For those times, he brought all of us together, he unified us. He changed the society. He impacted untouchability, so on and so forth. Many things he corrected. Swadeshi he led from the front. He was a self-effacing, self-sacrificing man. All that is given. But this country lost
2 million lives and above in partition, which happened on 14th August 1947. Highest number of people killed as a genocide on that day. This country lost 26,000 people as INS soldiers, whose names have been taken away. This country gave birth to many rebellious movements where women equally participated. Women like Meera Arya, whose breast had been taken off by the British. And that story is never told to us. She died an impoverished death in Hyderabad in 70s, 1973 or something, which nobody knew of. There are many such stories. I think India needs to relearn its history and get inspired to do better and better for future generations. We have the philosophy, we have the strength, and we can do it only if we walk the path as set up by greats like Sri Aurobindo and others who sacrificed everything for the well-being of this nation. With these words, जो अमृत महोत्सव चल रहा है और हर घर तिरंगा चल रहा है, उसको हम अपनी प्रेरणा बनाएं, संकल्पित हों और सिद्धि तक पहुंचने के लिए रास्ता चुनें। संकल्प से सिद्धि का रास्ता संस्कारों के माध्यम से होकर जाता है और तिरंगा उत्सव को अपना एक संस्कार उत्सव बनाकर आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for singing to us the glory of our tricolor and how our beloved Prime Minister has connected everybody with him. You pointed out the importance of Swadeshi and how India is gradually changing and moving towards excellence. And you also highlighted Sri Aurobindo's contribution in bringing about this change. So now moving forward, before we move forward, I would like to point out briefly the works which we are carrying out as Center for Human Sciences. We have a year-long course based on Sri Aurobindo's philosophy, his life, his philosophy on politics, his philosophy on Upanishads, his translations of Upanishads, the Vedas. So you can subscribe to all the 12 modules. There are 12 modules divided into 120 hours of lectures. So you can subscribe it on our website and listen to the lectures. We also have a webinar series called Vaichariki, and it is being done in participation with a YouTube channel called Sangam Talks, where we have a keynote address. The layout is such that we have a 1 hour long keynote address by a speaker, followed by a panel discussion between various participants. Then we had a conference in participation with the IIAS on Sri Aurobindo. We also had a national seminar on Sri Aurobindo's Life Divine in association with ICPR. We are currently involved in IKS project on Avadhan Kala, where we are researching about the ancient Vedic discipline of concentration. And presently we have this 10 lecture series of 10 lectures. We will be understanding about the philosophy of Sri Aurobindo regarding culture and nationalism. So moving forward, I would like to invite Dr. Makarand Paranjape to speak to us on Sri Aurobindo's idea of Swaraj towards a new India.